students, good morning. Let's begin this wonderful, beautiful day with morning prayer. Eternal God, Creator of all, I firmly believe that I am now in Thy presence. I adore Thy divine majesty, and I ask of Thee to enlighten my mind that I may know Thee more clearly, and to move my heart that I may love Thee above all things and my neighbor for Thy sake. Help me that I may never, in my thoughts, words, or deeds, offend against Thy holy law. Hello everyone, welcome back. This video lecture for class 7th subject science and chapter number 10, that is respiration in organisms. So dear students, in previous classes we have already understand that what is the respiration. In those classes we have learned that respiration is nothing, it is only breathing process है ना. हम जो भी सांस ले रहे हैं, breathing, inhalation और exhalation कर रहे हैं, that is only respiration. But today we will detail study about the respiration process which occurs in living organism, isn't it? Because we all know that respiration is not only consist breathing, isn't it? In respiration process there are so many other activities are also include. Other cells are also functioning in respiration process. So we can say respiration consists of breathing, and along with breathing the cellular respiration is also there. Fine. And under the cellular respiration we will study about the aerobic respiration and anaerobic respiration. So today's topic which we are going to cover by this lecture, that what is cellular respiration and why do we respire, and third thing which we are going to learn, that is types of respiration. So moving ahead, first point, that is what is cellular respiration. So to understand this concept, here I have a very simple example. Suppose I am moving in a garden, है ना. I am moving fast in a garden, or we are running, I am running fast in the garden. So what will happen? My breathing rate will be fast, isn't it? Or my breathing rate will be fast, or I will breathe very fastly. So why it happens? Have you ever thought why it happens? So we can say it is due to the cellular respiration, right? What is this? It is due to the cellular respiration. So what is cellular respiration? Further we will later on we will study about it. Now what is cellular respiration? We can say that each cell of an organism perform certain function that we already learned in previous chapter, है ना. कि हमारी body का first of all our body is made up of cells and tissues, isn't it? And each cell of organism, each cell of living organism performs certain function like nutrition, transportation, then excretion, reproduction, and respiration is also there. So to perform these function, ये सारे functions करने के लिए सेल को क्या जरूरी है? हमें पता है कोई भी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए एनर्जी चाहिए, है ना. एंड अब अगर हमारी बॉडी की बात कर रहे हैं, इफ़ दीज ऑल एक्टिविटीज़ आर डन बाय आवर डिफरेंट ऑर्गन्स, सो these organs also needed what? एनर्जी, है ना. इन ऑर्गन्स को भी एनर्जी की नीड है. इवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग, वी ऑल्सो रिक्वायर एनर्जी, इजंट इट? बट कैन यू इमेजिन, हैव यू एवर थॉट दैट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम? ये हमारी बॉडी में एनर्जी आएगा कहाँ से? जो हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल्स ये सारे फंक्शंस कर पा रहे हैं. सेकेंड थिंग, वी जनरली नोटिस देयर आवर पेरेंट्स इन सिस्टर्स, है ना, कि खाना खाओ, टाइम पे खाना खाओ, ये चीज़ खाओ, वो चीज़ खाओ, फ्रूट्स ईट करो, वेजिटेबल्स ईट करो, ग्रीन वेजिटेबल्स फॉर डाइट में लो, इजंट इट? सो व्हाई दे आर इंसिस्टिंग अस? Because
दिस फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी इन आवर बॉडी। जो हम फूड ईट कर रहे हैं उसी के कारण हमारी बॉडी में एनर्जी गेट हो रहा है, और यही एनर्जी डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमारे ऑर्गन्स को नीडेड है, इजंट इट? सो वी कैन से द फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस भी इस एनर्जी के कारण हो रहे हैं। एंड सेकेंड थिंग, जो हमारी बॉडी जो रेस्पिरेशन प्रोसेस हमारी बॉडी में हो रहा है, दिस इज़ ऑल्सो हैपन ड्यू टू दिस एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी, हमारी जो बॉडी में स्टोर्ड एनर्जी है, इसी के कारण हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन प्रोसेस भी हो पा रहा है। एंड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन व्हाट इज हैपनिंग, एनर्जी इज रिलीज्ड विच वी आर ऑलरेडी टेकन बाय डिफरेंट ऑर्गन्स, which we are already taken by food, isn't it? So therefore we can say all living organism respire to get energy from food। हम respiration इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी बॉडी में एनर्जी है, वो एनर्जी डिफरेंट ऑर्गन्स के थ्रू ली भी जा रही है, टेकन भी की जा रही है, और डिफरेंट एक्टिविटी को परफॉर्म भी की जा रही है ना। लेकिन अलॉन्ग विथ व्हाट इज हैपनिंग, वी आर रेस्पायरिंग टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। सो ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी ब्रीद इन एयर, है ना, हम बॉडी क्या कर रहे हैं, एयर में ब्रीथ कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, व्हाट इज ब्रीदिंग? सो हियर वी कैन से द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग। द प्रोसेस ऑफ inhaling and exhaling. Here I am going to write inhaling and exhaling. So what is here inhaling and exhaling mean by? Inhaling, that means first of all what is the breathing? Breathing is the process of, breathing is a process which occur in our body, and it is, this process is done by different organs. And in another words we can say the process of inhaling or exhaling of air is called breathing, है ना। हमारी बॉडी से जो भी पार्ट्स इनहेल हो रहे हैं या एक्सेल हो रहे हैं, दीज ऑल पार्ट्स, इनहेल और एक्सेल किसका हो रहा है, एयर का। दैट मीन्स बॉडी के अंदर एयर आ रहा है और बॉडी के बाहर एक्सेल हो रहा है एयर का। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूस हमारी बॉडी में ये प्रोसेस चलता रहता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड breathing, right? So we can say the taking in air, taking in of air rich in oxygen, right? taking in, हमारी बॉडी में हम क्या कर रहे हैं, taking in of air, बॉडी के अंदर जो एयर ले रहे हैं, विच शुड बी सॉरी, विच शुड बी रिच इन ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड इनहेलेशन। इनहेलेशन जिसमें बॉडी के अंदर ऑक्सीजन, O2 दैट मीन्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हम जो इनटेक कर रहे हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इनहेलेशन। एंड व्हाट अबाउट एक्सहेलेशन? एक्सहेलेशन विल बी ऑपोजिट ऑफ द इनहेलेशन, और वी कैन से इन sorry, what is exhalation? इनहेल ऑक्सीजन इज सप्लाई टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। जो हमने इनहेल किया ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर गया, दैट वुड बी सप्लाइड फॉर ऑल द सेल्स ऑफ आवर बॉडी विच आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन टू सर्वाइवल ऑफ द our body, right? So the giving out of air rich in CO2, that means carbon dioxide. So the giving out, इसमें क्या कर रहे हैं हम, taking, and here we are giving out। हमारी बॉडी से हम बाहर एयर को रिलीज कर रहे हैं, राइट? सो इन दिस प्रोसेस वी कैन से द गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज एक्सेलेशन। व्हाट, राइट? व्हाट इज दैट? The giving out of the air which is rich in carbon dioxide. What does it mean by CO2? Carbon dioxide, that means CO2. The giving out of the CO2 of the air from our body, that process is called exhalation, and elation, that is the taking in our body of oxygen. Clear? So here inhalation and exhalation process occurs under the breathing. Clear? Next thing,
जो हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज हो रहा है, द कार्बन डाइऑक्साइड इज कलेक्टेड फ्रॉम ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में जहाँ पे भी वो गैदर हो चुका है, उसका सप्लाई हो चुका है, अब वो कलेक्ट होके हमारी बॉडी से जो एक्स्ट्रा बाहर, उसको बाहर निकालना पड़ेगा, है ना, वो कलेक्ट हो जाती है सारे सेल्स के थ्रू ऑफ द बॉडी, एंड थस ब्रीदिंग हेल्प इन सप्लाइंग ऑक्सीजन टू द सेल्स ऑफ द बॉडी एंड रिमूवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम दैम। ओके, ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है सारे सेल्स पे जो बॉडी के डिफरेंट सेल्स हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो रहा है, इजंट इट? Next process, that is, what is cellular respiration? Okay, what is cellular respiration? So here we can say, as we all know, the process of breakdown of food, as we all know that whenever digestion process occurs in our body, in which process, under this process, complex component of food कन्वर्ट इनटू सिंपलर सब्सटेंस, इजंट इट? जो भी हमारी बॉडी में हम फूड ईट कर रहे हैं, दैट ऑल इन द फॉर्म, इन दैट ऑल विल बी इन द फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स component, and that will be turned into the simpler substance by the process of digestion. So here what will happen in the cellular respiration? The process of breakdown of food. ब्रेकडाउन किसके थ्रू हो रहा है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपलर सब्सटेंस में किसके थ्रू कन्वर्ट हो रहा है? वेयर देयर आर द सेल्स विच आर हेल्पफुल टू occur this process, to complete this process of digestion. So अब यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स फूड का ब्रेक डाउन हुआ विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, उसके साथ हमारी बॉडी से क्या रिलीज हुआ? एनर्जी. That is called cellular respiration, right? What is that called? The process of breakdown of food in the cell with the release of energy is called cellular respiration. So cellular respiration takes place in the cells of all the organism. We all know this respiration process, cellular respiration, also takes place in the cells of body. Moving further, the another topic of this video, that is the types of respiration. So here I would want to share with you that there are the two types of respiration, that is aerobic respiration, and another one is aerobic respiration, and another one is, that is, anaerobic, isn't it? So these are the two methods of respiration. So first we will discuss about the aerobic respiration. When the breakdown of food, ग्लूकोज टेक्स प्लेस विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन. क्या हो रहा है? फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है, दैट मीन्स फूड विल टर्न इन टू ग्लूकोज, इजंट इट? एंड दैट विल बी टेक प्लेस विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन इन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द रिलीज ऑफ एनर्जी. ऑक्सीजन का सप्लाई हो रहा है हमारे डिफरेंट सेल्स में, दैट वी ऑलरेडी लर्न, है ना. फूड को टर्न हो रहा है सिंपलर सब्सटेंस में, दैट मीन्स फूड विल बी ब्रेक डाउन, एंड विद द एनर्जी, विद द यूज ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का यूज करते हुए फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है. एंड सेकेंड थिंग, व्हाट विल बी द रिलीज? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एंड विद द रिलीज ऑफ एनर्जी. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड aerobic respiration. This process is called aerobic respiration. So in the formation about these compounds, we can write that glucose plus oxygen, glucose plus oxygen, that will change in carbon dioxide plus water and plus energy. This will be released by the breakdown of the food. So this process is called aerobic. What is that process is called? This process is called aerobic respiration. Under the aerobic respiration, we can say breakdown of food takes place with the use of oxygen, and that will released by our body in the form of carbon dioxide, water, and the release of energy. Clear? Cool. So moving further, the another type of the respiration, that is anaerobic respiration. What is that? That is anaerobic respiration. So under this respiration, we can say some organisms like yeast, fungi. These are the organisms where ग्लूकोज का ब्रेक डाउन तो होता है, बट इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, राइट? इन एरोबिक रेस्पिरेशन वी हैव लर्नड अबाउट वेयर ऑक्सीजन प्रेजेंस मस्ट,
isn't it? breakdown फूड का हो रहा है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है फूड, बट इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन. बट अंडर द अनएरोबिक रेस्पिरेशन वी कैन से in some organisms like yeast, where breakdown glucose is completed in the absence of the oxygen. इस केस में ऑक्सीजन की नीड नहीं है, isn't it? So in such cases glucose is not completely broken down into कार्बन डाइऑक्साइड, है ना. ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन की नीड है, बट यीस्ट इस टाइप के कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जहाँ पे completely ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं हो पाता. एंड इनटू किस में ब्रेकडाउन नहीं हो पाता था? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में इसका ब्रेकडाउन नहीं हो पाता है. सो दिस इज द देयर इज अगेन फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड विथ रिलीज ऑफ लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि हियर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज देयर, है ना. ऑक्सीजन का एब्सेंस है, इस कारण ग्लूकोज भी कम्प्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का भी रिलीज प्रॉपरली नहीं हो रहा है, isn't it? एंड ऑब्वियस एनर्जी का भी लेस इसमें इसी लेस अमाउंट ही रिलीज हो पा रहा है. सो हियर अगेन वी आर राइटिंग फॉर्मेशन में अगेन ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा, है ना. ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, बट द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन बाय यीस्ट, है ना, उसका ऑक्सीजन का यूज़ नहीं हो पा रहा यीस्ट के थ्रू, एंड दैट विल टर्न इनटू अल्कोहल बिकॉज ऑक्सीजन का एब्सेंस था, है ना. ऑक्सीजन का एब्सेंस था जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड का कम्प्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हो पाया, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कम्प्लीटली रिलीज नहीं हो पाए. सो इट विल टर्न इनटू अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड plus energy. Here the water releases will be lack amount. Okay, water amount will be lack in this process, water amount releases will be lack in this anaerobic respiration. So we can say anaerobes. Next topic, that is anaerobes. So what is the anaerobes? Here we can say the organisms such as yeast, just now we discussed about, that is the yeast that can survive in the absence of air. जो absence air के बिना, that means oxygen के बिना भी अपना खुद का survive कर पाते हैं, such type of, and that comes in the under the process of the anaerobic respiration. Such organisms are called anaerobes, right? The anaerobes organisms are there which are there, they in which the anaerobic respiration occurs in their body, isn't it? कुछ ऐसे organisms हैं such as yeast in which there is no need, absence of air, or we can say there is a free oxygen. Such type of organisms are called anaerobes because in which in them anaerobic respiration occurs in their body where absence of oxygen is there. Next we can talk about yeast, है ना. Yeast are unicellular, that means single celled organism, that we already learnt in chapter number 1. Yeast are the unicellular. What is the mean by unicellular? Unicellular, that means, what is the mean by unicellular? Unicellular, that means सिंगल सेल, ओके, जिसमें सारे फंक्शंस बॉडी के लाइक रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड ब्रीदिंग प्रोसेस, जितने भी बॉडी के सारे फंक्शंस हो रहे हैं, ऑल द फंक्शंस occurs by only single cell. So they respire anaerobically, क्योंकि उनकी बॉडी के सारे फंक्शन सिंगल सेल के थ्रू हो रहे हैं, है ना. तो उनकी बॉडी में जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, दैट इज दैट दे रिस्पायर, वी कैन से दे रिस्पायर अनएरोबिकली, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दे यील्ड अल्कोहल, है ना. जस्ट नाउ वी हैव टॉक्ड कि उनकी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड का कम्प्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हो पाता, जिसके कारण रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर will be less in amount. But instead of the release of the water की कमी के कारण वाटर कम रिलीज हो रहा है, तो उसके जगह पे इंस्टेड ऑफ द वाटर what will be released? Alcohol. They yield alcohol. For this reason yeast are used to make
वाइन एंड बियर ऑल्सो, वाइन और बियर में हमें पता है यीस्ट का फॉर्म होता है. सो दिस इज़ द रीज़न ओनली कि वाइन और बियर में यीस्ट का यूज़ किया जाता है, बिकॉज इन दिस प्रोसेस दे यील्ड अल्कोहल. So one more important thing, that is anaerobic respiration also occurs in human muscles also, right? कहाँ पे होता है? Human के muscles में भी anaerobic respiration होता है. Now to understand this thing, again we have one example that we can say that ह्यूमन मसल ड्यूरिंग हैवी, जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं ना, हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं, सच एज रनिंग फास्ट और सम अदर मसल्स वर्क, कुछ मसल से हैवी हम एक्सरसाइज करवा लेते हैं, तो व्हाट विल हैपन एट द टाइम व्हेन देयर इज़ अ टेम्पररी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन. उस समय हमें हमारा ब्रीथ रेट ज़्यादा हो जाता है ना, हमारा ब्रीदिंग रेट ज़्यादा हो जाने के कारण हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड होती है, इजंट इट. और वन मोर एग्जाम्पल, दैट इज़ द एथलीट जो बहुत ज़्यादा रन फास्ट करता है ड्यूरिंग द रेस, व्हाट इज़ हैपन इन देयर बॉडी, द बॉडी नीड्स मोर एनर्जी. हमारी बॉडी को और ज़्यादा एनर्जी, हमें बहुत पसीना आने लगता है, हम हाँफने लगते हैं, है ना. सो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एट द टाइम आवर मसल्स नीडेड द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन. हमारी मसल्स को ऑक्सीजन की नीड ज़्यादा होती है, हमारी बॉडी को एनर्जी की उस टाइम नीड ज़्यादा हो जाती है, इजंट इट. द बॉडी नीड्स मोर एनर्जी विच इंक्रीजेज द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन फूड. फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज हो जाती है. सो एथलीट हैज़ टू ब्रीथ फास्टर एंड डीपर टू इनहेल मोर ऑक्सीजन. अपनी बॉडी में ऑक्सीजन ज़्यादा गेटिंग करने के लिए वो ब्रीदिंग फास्ट और डीपर करता है, isn't it? So we can say anaerobic respiration in human muscles also occurs. So till here today's video lecture we are going to complete. Hope so you all have understood. In next video lecture we will meet with remaining part of this chapter. Till that, take care. Goodbye.